Is my screen visible to you? Yes, visible as well. That's great. So what we are going to do today is that we will be trying to solve whatever spatial description and transformation we have been doing for the last about 2 weeks. So we will try to solve, or we will try to get the help from the software, which is Matlab. So how can we use that? So we know मैं अभी MATLAB आपके सामने भी खोल के ये करेंगे, but सबसे पहले तो I just want to remind you of certain. Let's see if I want to write a matrix A. So how do I write in Matlab? Is one. This is one row. 1, 2, 3. Then semicolon like this. Then 4, 5, 6 like this. 7, 8, 9. So in fact, if I press enter here, so I am going to come across a matrix like this. So ये सिर्फ मैं एक आपके साथ ये वाली जो चीज आपको दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ एक रिवीजन है कि how do we write down the matrix in MATLAB. तो यहाँ पे आपको ऐसे ये दो जो MATLAB की कमांड में नजर आ रही है. So this is the outcome after you press enter. So this is the outcome of this. So if you want to multiply two matrices, so the command for multiplying two matrices is A hash B. So this is going to give you the multiplication of two matrices. All right. So हमारे केस में क्या होगा? Let's see what we would be requiring. We would be requiring actually rotation matrices. We will be requiring rotation matrices, which we know these are rotation about x, then rotation about y, and then rotation about z. So we know these matrices, these rotation matrices, that rotation about x is 1, 0, 0, then 0, 0, cos of theta minus sine of theta, and cos of theta. So this is rotation about x, rotation about y would be 1, 0, 0, 0, 0. So this will be my cos theta, sin theta, minus sin theta, and cos theta. मैं ये बार-बार इसलिए आपके सामने ये मैट्रिसेस लिखता हूँ कि ये आपको बिल्कुल जुबानी याद हो जाएंगे. The moment you look at our rotation about y, so you exactly know that what is that. ठीक है? तो ये बार-बार आपको आपके सामने मैं इसकी repetition इसलिए करता हूँ that so that this just becomes part of your habit. So if I talk about z, so this will be, can somebody tell me about z? Cos theta minus sin theta. Minus sin theta, good. Zero. Sin theta, Cos theta. And then 0, 0, 1. Very good. So this is something which you should, I would request you to go through time and again and again, so that this just comes, sits into your mind, that whenever I'm going to talk about rotation about any of the axes, so you know that where you need to plug in the value of theta. So this is how we are going to go, and we are going to talk about the. Let me just open up the Matlab window. Okay, can you see the Matlab window here? Yes, sir, visible.
So let's see, मैं आपको just एक छोटा सा मैंने कुछ दो चार commands लिखी थी, so let me just okay. So ये इस वक्त आपको दो command नजर आ रही है. This is a matrix A, and can you find out that what is the rotation? Y. Which this is rotation about. Y. This is rotation about y. Very good. Who answered this question? Hassan. Hassan Shahbaz. So this is rotation about y, and just look at this that whenever we are going to write down the angle, so this is if I want to write down cos 90 degrees, so I'm going to write down cos b and 90. So एक तो ये आपके जहन में रखना है कि जब हम डिग्रीज में बात कर रहे हैं, so हमें ये करना है, और अगर मैंने रेडियंस में बात करनी है तो मैंने इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है. ये ध्यान में रखना है. अगर मैं रेडियंस की बात करूं किसी भी टाइम पे, if I'm using Matlab and I'm talking about the theta and radian, so फिर कमांड जो है इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है with pi by 1. एक चीज, and if we are dealing in degrees, which normally we would do, so this would be the command cos d 90. So this is, if I look at this now, the matrix A is going to look like me, and this is the rotation about y-axis. This is one. So this was A. So let us see what would be B. G. अब देखिए, these are देखिए ये क्या है? About x. About x-axis and rotation of how many degrees? 30 degrees. Minus 30 degrees. Minus 30. Okay, this is the rotation about x by minus 30 degrees. So this is going to look like something like this. All right. The next command is multiplication of A with respect to B. So this is now the rotation of B with respect to A. So this is going to look something like this. ठीक हो गया? अच्छा, now मैं इसके ऊपर एक और अगली बात करने लगा, रोबोटिक्स का टूल बॉक्स. मैटलैब के साथ जो रोबोटिक्स का टूल बॉक्स यूज हो रहा है इनहेरेंटली, दैट इज द पीटर कॉक्स टूल बॉक्स. लेट मी जस्ट go here, let me just duplicate this slide. All right, so the toolbox which is used with the MATLAB, जो कि इसके साथ integral part है, so the integral part of robotics toolbox, the integral part robotics toolbox with MATLAB. So this is a cork, I think it is CORKE. Yes, this is cork toolbox. This has been developed by Dr. Peter Cork. And I do not know whether you remember or not, Dr. Peter Cork was here for the conference. I tried visualization now. So Dr. Peter Cork was here with us. I do not know whether you remember that or not. Did somebody attend it? Did somebody attend his lecture? His talk? Attend नहीं की थी सर, लेकिन ये पता है थे. Okay, yeah. So Dr. Peter was here for the conference. So the cork toolbox is the integral part of the robotics toolbox. So ये देखिए, अभी मैंने जितनी ये आपको commands उसमें मैंने करके दिखाई थी कि मैं पूरा एक मैट्रिक्स लिखता हूँ. So if I want to rotate about x by a degree by a 60 degree. So this
Peter Core toolbox does this. If I just write down not x 60, so this is going to give me the rotation matrix of x. The rotation matrix about x-axis by 60 degrees. So let me just go back to the Matlab window and I write down. So let's see what was my x was minus 30. Let's see if I can rot x जो कि मैंने b लिखा था minus 30. So this should give me the same value as given by this. ये देखिए अगर पूरा b का matrix मैंने लिखा था. So I in fact wrote down this command to write a matrix of rotation of x about with a rotation about x for a degree of minus 30. So I can find out the same matrix by just single command using the Peter Block toolbox. Okay, so the toolbox is making your life easier. So there are a lot of more commands which you can come across if you want to practice more about using Matlab for your rotation matrices. So you can, I'm just going to expose you with the rotation matrix only at the moment. But then further, when we are going to go into the kinematics part, so we will use some more commands from the same toolbox, which will give us the kinematics matrices and kinematics diagrams and some kinematics graphics also. If we get time and if we have time with us, so we can go into those details also using the Peter Box toolbox. Okay? So इस वक्त what I would request you to do, just to practice this, you can use your you can write down your address on the paper on the book while you are practicing. Then you can multiply those, and then you can after multiplying, then you can use those here in the Matlab also, just to ensure that whatever multiplication you have done by hand are correct, because that needs some practice. आप miss out कर देते हैं चीजों को, so वो एक practice चाहिए. So this is again as far as your exam is concerned. So because in the exam you will be required to write down the matrices, then multiply and find out an answer. So for that you need enough practice and the skill to do it in a lesson. So that will only come with the practice. But here you can verify your answer. Here you can verify your answer. Let's see if I want to multiply this using the box toolbox. So मेरे पास क्या था? I had a rotation about y by 90 degrees. So rot y by 90 multiplied by rot x by minus 30. So this should be the answer. So what you can do is that after multiplying this and getting an answer, you can check your answer with the help of this. ठीक है? अच्छा, अब जो assignment है, let's come to the assignment now. मैं अभी आपकी जो assignment है वो यहाँ पे हम थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे and then मैं आपके साथ आपसे फिर बात करके कि किस तरह से इसको एग्जीक्यूट करना है. So we are going to talk about that also. So this is the your first assignment. So assignment number 1. This assignment will be uploaded for you on LMS also, and you have to submit that on LMS. तो आपको मैं 2 weeks का टाइम भी दूंगा उसके लिए, और उसके अंदर जो पूरी असाइनमेंट का जो कैसे किया जाएगा, कैसे सबमिट होगा, क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, those will be written on this. So just यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा that you need to write down a program which should be able to give you fixed angles, fixed angle rotation,
all 12 variants. It should also be able to give you Euler angle rotation, all 12 variants. अब इन जनरली क्या होगी जो कि हर स्टूडेंट की अपनी होगी कि वो ये कैसे, एक तो तरीका ये है कि वो ये 12 के 12 मैट्रिक्स लिखे और फिर हर मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू डाले और एंटर करे, आपको ये मिलता है। Another way of doing it is कि आप 3 एंगल डालें x y z, then you press कि आइलर से करना है या फिक्स से करना है। सो अगर आइलर से करना है तो वो उसको जो है वो मल्टीप्लाई कर देगा फॉरवर्ड के मुताबिक, और अगर फिक्स से करना है तो उसको रिवर्स के मुताबिक कर देगा। सो इतनी स्किल्स आपके पास हैं, कैन यू मेक दिस प्रोग्राम? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this should not be a problem it means for you. So comparison कैसे होगा कि एक का दूसरे से कैसे बेहतर है, कि वो आप इसको कितना प्रोग्राम को ऑटोमेटेड बना दें कि मिनिमम नंबर 1 मिनिमम लाइन ऑफ कोड्स 1। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा कि आप इसके अंदर आप टूल बॉक्स की कोई कमांड को यूज नहीं करेंगे। For this assignment, you will not use any command of the toolbox. Commands of toolbox are not allowed to be used. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये not x not y ये चीजें यूज नहीं करें। So you need to come out with an idea that how to write down this program. अब आपके प्रोग्राम को चेक करने का तरीका क्या होगा? प्रोग्राम को यू कैन चेक कि आपका जो प्रोग्राम है वो ठीक आउटपुट दे रहा है। यू कैन देन यूज योर cork toolbox commands to ensure correctness of your program. So actually, I would be using this to evaluate your program. आप एक अपना प्रोग्राम बनाएंगे, you will give it to me, I'm going to run it on my Matlab, and then I'm going to ensure correctness by using the cork toolbox. So अगर आपने आपका प्रोग्राम ठीक एल्गोरिथम ठीक चल रहा है, तो इसका मतलब है कि वो cork toolbox जो है वो उसकी वैल्यूज के साथ वो मैच करेगा। ठीक है, so आप जो है वो इस toolbox को यूज करेंगे only for your correctness. You will not use these commands into your algorithm, और आपने ये फिक्स एंगल रोटेशन और आइलर एंगल, और इसके अंदर अब आप जितना इसके अंदर जो बेहतर कर लेगा, लाइक शॉर्ट जितना कम लाइनों के कोड भी ये कर लेगा 1, जितना इसको ऑटोमेट कर लेगा, लेट्स सी कोई कहता है कि मैं इसकी GUI बना लेता हूँ, तो अगर वो कोई GUI बनाना चाहें आप तो आप जरूर GUI को भी यूज करें। सो द मार्किंग जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी जो मार्किंग होगी दैट विल बी डन, मार्किंग जो पैरामीटर्स होंगे वो हाउ short is the code, number 2 how better automated is the code, three have you introduced some GUI from this, and obviously
After doing all this, correct answers, correct outputs. Okay, so these are the four things which will be used. So number one, कि आपका जो कोड है वो आपको करेक्ट आउटपुट दे वन देन shortest possible code कितना बेहतर ऑटोमेटेड है and have you introduced some rule for this code or not. अच्छा, definitely if you just write down on Google that a Matlab GUI or a Matlab code for just by looking at your code, मैं शायद बहुत ज़्यादा ये evaluate भी ना कर सकूँ कि यार इसमें किसने किसकी कोई नकल की है या किसी से हेल्प की है। वाइवा के दौरान आपको पता लग जाता है, आप जब बात करते हैं और ये कुछ चीजें सवाल करते हैं तो आपको ये पता लग जाता है एज ए टीचर कि यार इसने खुद की है इसके पीछे या पार्शियल खुद की है या फुली खुद की। So that I might not be able to guess or might not be able to assess, but this is my request to you all. Please get your hands dirty with your keyboard using Matlab, making rotation matrices. So ये आपको कभी जिंदगी में ये चीज definitely this will help you whenever you are you have if you decide to go for higher studies in robotics. Then this will definitely help. जी, अब यहाँ पे कोई किसी की कोई मुझसे कोई क्लैरिफिकेशन लेना चाहे इसके ऊपर कोई बात करना चाहे। सर आप 3 एंगल्स पुट करेंगे और वेरिएंट का भी बताएंगे कौन सा आपको चाहिए? नहीं, वो आप खुद करें। लेट्स सी, आपने एक प्रोग्राम बना दिया, अब जब आप मुझे आपने अपना कोड भेज दिया, मैं कहता हूं कि यार मुझे आपके प्रोग्राम में से ZYZ आएगा रहना चाहिए, ठीक है? तो मैं एज अ यूजर उसके अंदर 3 एंगल्स डालूं और उसको ये मेंशन करूं कि यार ये एंगल Z में है, ये एंगल Y में है, ये एंगल दोबारा Z में है और मुझे इसका आउटपुट दो, ठीक है? सो मुझे उसका आउटपुट मिलना चाहिए। एज ए यूजर मुझे इससे गर्ज नहीं होनी चाहिए कि पीछे क्या कोड चाहिए। एज ए यूजर मुझे सिर्फ ये है कि मेरे पास 3 एंगल है, मैं उनको आइलर एंगल में या उनको फिक्स्ड एंगल में मल्टीप्लाई करके एक रोटेशन मैट्रिक्स फाइनल रोटेशन मैट्रिक्स लेना चाहता हूं। राइट सर, ठीक है? तो ये थोड़ी सी मैं आपको ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये आपके असाइनमेंट के ऊपर जो मैं आपको शेयर करूंगा आपके साथ असाइनमेंट का जो डॉक्यूमेंट होगा उसके अंदर ये चीजें जो है वो एज क्या कहना चाहिए कि एज अ फाइनल प्रोडक्ट दो these things will be written on it. अभी सिर्फ मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूं। जी, कोई और सवाल, कोई और क्लैरिफिकेशन इसके अंदर? ओके, सो अगर इसके अंदर और कोई क्वेश्चन नहीं है, so let me just now switch on the switch the recording off so that Machine, sir.